This is how you calculate the unit vector. Unit vector divided by the magnitude. Okay. So the last thing are the products of vectors. So we've got two types of products. We've got the scalar product and the vector products. Now, how do you find out the scalar product of two vectors? How do you find the vector product of two vectors? Do you remember the formulas for calculation of scalar and vector products? Yes. Okay, how do you find out the scalar product of two vectors? For example, there's A dot The B. dot products, and those were the cross products. Sorry? Vector. The scalars were the dot product and vectors were multiplied cross products. Okay, that's fine, but what's the formula for scalar product and vector product? What's the formula? सर यही वाला फॉर्मूला था ना जो आपने लिखा है. बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? A cross B, AB sin theta. ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा। AB sin theta. Apart from that, you also need to understand the fact that whenever the dot product is zero, that means the vectors are perpendicular to each other. Okay, because cos of 90 is 0. Okay, cos of 90 is 0. That's why a dot b is, whenever that's 0, a dot b is 0 means that the two vectors are perpendicular to each other. And why am I looking at cos? Because this a dot b is actually ab cos theta, right? So whenever we get an answer which makes cos theta 0, the entire dot product becomes 0. Does that make sense? If theta is 0 then 1 नहीं होगा. Cos of 90 is 0. Cos of 91 नहीं होता. Sir, not Sin 9, 90 is 0 होता. 0 degree. Cos of 0 1 होता है. Yes. जी बिल्कुल. इन cos 90 0 होता है. ठीक है, मैं मिनिमम 0 की बात कर रहा हूँ, तो 0 तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, एंड मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी. Whenever theta is 0, so cos of 0 is 1, and because cos of 0 is 1, a dot b equals a times b. That's it. Now let's talk about the cross product. So if we have a cross b, it's ab sin theta, and similarly, if the two vectors are parallel to each other, in the value of theta is 0 degrees, then in that case, this cross product turns out to be 0. So for two parallel vectors, the cross product is 0. Okay. Now, there's another way of crossing the two vectors as well. For example, if you have a vector Sir, equation of a, scalar 2i products plus होते हैं वो by definition they are perpendicular और नहीं by definition they are parallel by या definition. perpendicular. What do you mean Like by definition? जो उसका वो जो आपने बनाया था कि वो जो ग्राफ टाइप बनता है कोऑर्डिनेट्स में तो By definition तो कुछ भी नहीं है इसमें. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन में कि जब ये वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्रीज पे हो एक दूसरे के, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. दैट्स व्हाट आई सेड. आई डिडंट से ओके definition. ओके Okay. यस कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछे. नो सर समझ आ गया ना उस चीज के आगे बढ़ते हैं.
अब अगर आपके पास एक क्रॉस भी निकाल रहे हैं और आपके पास दो वेक्टर इक्वेशंस गिवन है 2i plus 3j plus 4k 3i plus 3j plus 4k, how exactly will you cross these two vectors together? Any guesses? We are gonna multiply 2 with 3 and 3 with 3 and This is important actually. This is 4 very important. So I want you to do this on paper. Can you just do it and tell me the answer, please? okay. I'm giving 1 minute or 2 minutes. 1 or 2 minutes. जी आंसर आया? Yes, what's the answer? Oh, the hard should be taking this long. Is it 6i plus 9j plus 8k? Now, what you did was IJK, correct? You arrange these two vectors together. 2, 3, 4, and 3, 3, 2. And then you equated them to an equation which looks like this. I minus j plus k. Now to find out the components of each equation, to find out each component, you need to find the determinant of the other two components. So for example, if you need to find out I, you need to ignore I and you need to find the determinant of j and k, which is going to be 3 times 2 minus 3 times 4. And I think it is -6. So yeah, -6. And then to find j, you need to ignore that. So 4 minus 12 is -8. That's what we did, right? 4 minus 12 minus 8. And then what about k? Do the same. 2 3 is 6. 6 minus 9. 6 minus 9 is -3. Did you get the same exact equation? Or did you get an equation with opposite signs? This is the vector equation, vector product, because vector product will result in a vector, right? So this is a vector that you get. Does this make sense, Yes. guys? And Muntaha, did you get the same exact answer? Was it Yes. different? So it's like पहले आपने जो है वो 3 into 2 मल्टीप्लाई किया, उसको आपने 4 into 3 माइनस किया, देन बीच वाली लाइन जो है उसको इग्नोर करके कॉर्नर्स वालों के साथ ऐसे किया, एंड देन दी लेफ्ट वाला पार्ट, राइट? एक second. Can you please repeat? सर मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया, इट वाज लाइक कि पहले जो है लेफ्ट वाली लाइन इग्नोर करके मल्टीप्लाइंग द ऑपोजिट्स 3 into 4 एंड -4 into 3, फिर 3, बीच 4 वाली and 4 लाइन। into 3q? सर मैंने इस मेथड से प्रैक्टिस की थी, उसके बाद जो है लाइक माइनस एक करके second. 2 What did you into say? I सर मैं को आप कैसे निकाला आपने? भेज दूँ आपको सोल्यूशन? ठीक है, भेज दो।
मुझे ये पता है आंसर सेम है। यस। आंसर सेम आ गया जो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। छोड़ो, फाइन। अब इसके बाद यू नीड टू नो अबाउट द यूनिट वेक्टर्स। अगर आई और आई को क्रॉस करें तो आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ गई? इसी तरह से जे यस। और जे को क्रॉस करेंगे तो भी जीरो, के को क्रॉस करेंगे तो भी जीरो। अगर आई जे को क्रॉस करेंगे आंसर आएगा वन, जे के को करेंगे तो भी आएगा वन, और फिर के और आई को करेंगे तो भी आंसर आएगा वन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट्स हो, आई और आई का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट में इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर द डॉट प्रोडक्ट इज मैक्स, राइट? आई और आई का डॉट प्रोडक्ट मैक्स यानी कि वन होगा, जे और जे का डॉट प्रोडक्ट वन होगा, ओके ओके का डॉट प्रोडक्ट वन होगा, ओके। इसी तरह से इफ डॉट प्रोडक्ट आई जे का है तो जीरो होगा, अगर जे के का है तो भी जीरो होगा, के आई का है तो भी जीरो होगा। दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। ओके गाइस, ये समझ आ गई? यस। बस ठीक है। इसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर्स यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो गया। अब जरा सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। स्केलर्स एंड वेक्टर्स की रिवीजन होगा कंप्लीट, ठीक है। we did the components, we did the scalar and vector product, या तो हो गया। yes, we did all of the stuff that is required in the syllabus, ठीक है। आज के ये हो गया, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, सही।